खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया कि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन को कर सकें। मैं पेरेंट्स को और ऑन बिहाफ ऑफ सर तुनेहाट, पास्टर परवेज खोखर एंड फ्रॉम संडे स्कूल children, we welcome you on this play. I hope you will enjoy and relax. And please, I would like to request you, please, I don't want the movement while the children are playing. Thank you. सबसे पहले अर्ली मैरी क्रिसमस, क्योंकि इसमें सर्टेन रीजंस हैं दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस प्ले अर्ली, कि हम बताना चाहते हैं सबको कि इसमें सबसे पहला क्रेडिट जाता है एक्टिविटा को, दैट ब्रेवली उन्होंने इस चीज का स्टेप लिया कि चूंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, 4 साल के बच्चों से ये स्टार्ट हो रही है एज, और 8-9 साल के बच्चे हैं ये। जहां तक मुझे याद है इसकी प्रेपरेशन जो है प्ले की शुरू की गई थी अक्टूबर में, तो उसके बाद अक्टूबर से अभी तक इसमें बच्चे बीमार भी हुए हैं, बच्चे कुछ नहीं भी आए, इनकी डायलॉग रिहर्सल, फिर इनके सारा सीखना, तो इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा जाता है एंटीविडा को, क्योंकि उन्होंने ब्रेवली पिकअप किया इस ग्रुप को। आई थिंक चर्च में पहली बार इतने छोटे बच्चों का ये प्रोग्राम हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद इन बच्चों की बहुत मेहनत है इसमें, बहुत सारे बच्चे बीमार रहे हैं फिर भी इन्होंने सीखा है। आप देखिएगा कि कैसे वो लोग अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, उन्होंने सीखा है सब कुछ। और इसके बाद जो वालिदैन है उन्होंने इतना ज्यादा मदद की है टीचर्स की, उनको सिखाने में, उनके ड्रेसअप में और उनके कॉस्ट्यूम्स रेडी करने में, दैट इज रियली वेरी नाइस। आप देखिएगा कि इस प्ले में आपको मेहनत नजर आएगी कि बच्चों की है, इसमें टीचर्स की है, एंड सबसे ज्यादा एंटीविडा की इसमें मेहनत है। थैंक यू सो मच। Thank you for your son who came to earth, a little one, who lived to teach us how we should be to all people, kind and good. We honor him with speech and song. Our song of praise to him belong. With joyful hearts we bow and sing a prayer of thanks for Christmas Day. लाइट ऑन कर Greetings, the Lord has blessed and is with you. What reading is this? The Holy Spirit. Do not be afraid, Mary, because God is pleased with you. You will have a son. You will name him Jesus. He will be great and people will call him the Son of the Most High. He will give you the throne of King David. He will rule over the people of Jacob forever. His kingdom will never end. How will this happen? The Holy Spirit will be upon you, and the power of the Most High will cover you. The baby will be holy. He will be called the Son of God. I'm not serving. Let this happen to me as you sing. And my spirit rejoices in the Lord, for he has regarded the most handmaid. For behold, all generations shall be blessed. For he who is mighty is a great extraordinary, and holy is his name. His mercies are on those who fear him, from generation to generation. Before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit, and her husband Joseph, being a son man,
and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. As he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife. The child in her is of the Holy Spirit. She will give birth to a son. You will name him Jesus. Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife. The child in her is of the Holy Spirit. She will give birth to a son. You will name him Jesus. Give him that name because he will save his people from their sins. From Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration taken place while Cornelius was the governor of Syria. So all went to be registered, everyone to his or her place of birth. Because Joseph was a member of the royal line, he had to go to Bethlehem in Judea, which was the King David's home. He took with him Mary, his wife. When they arrived in Bethlehem, all the inns were filled. They went from inn to inn. No one had a room for them, but one innkeeper offered them a place to sleep in the stable. When they were there, the time came and Jesus was born. Mary wrapped the baby Jesus and laid him in a manger where animals are fed. Out in the field, keeping watch over their flocks by night. An angel of the Lord appeared to them, and glory of the Lord shone around them. And they filled with fear, and the angel said to them, Do not be afraid, for behold, do not be afraid, for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and singing, Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased. Keep saying. Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased. when the angels went away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let's go to Bethlehem. Saya. Let's go to that.
Go to Bethlehem and see baby Jesus. Let us go over to Bethlehem and see the things happen, which the Lord has made so known to us. Good job. Take your sheep. Hallelujah. He's the most beautiful I've ever seen. Look at his tiny hands. Look at his eyes. Are so bright and alive. I hope he's warm enough to lay down to stay, but perhaps I'll put another cover on him. Just when I was wondering how could I be a father to a king, the savior of the world, your tiny hand grasped my rough but tender fingers. You seem to be reassuring me that nothing is impossible when God is able. Can it be that I'm already learning from you, my son? Thank you, God, for trusting Mary and me with your most precious gift. May we ever strive to be right. One more time, Mama. One more time, guys. Say nice and loud. I am just a shepherd. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. They looked up and saw the star, the same star they had seen in the east. It went ahead of them, leading them to the place where Jesus lived. There it stopped, and there the wise men found Mary and Jesus, Joseph also. In the Orient. Royal beauty bright, when
spirit of Christmas be always in our hearts. Where and every sound of community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing the Christmas carol with one big Merry Christmas and a happy holiday. The season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year star, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Merry Christmas and a happy holiday. That season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year stars, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. इतनी ज्यादा तैयारी, और मैं सोचता हूँ कि टीचर्स का जो सब्र और पेरेंट्स का और ये सारा कुछ खुदा को जलाल मिले। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आप देखते हो कि जैसे वसाइल थे, बड़ी कोशिश की सर्विंग टीम ने और भाई नवीद और उनकी टीम ने कि किस तरह से ये कर्टन बना दी है उन्होंने, और ये सारा कुछ, और ये सारी ड्राइंग जो इतने, अगर ऊँट खरीदने जाते हम और गाय और ये तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन आइए फिर खुदा उनको जलाल दें और इन बच्चों की तरफ हाथ करके आज बरकत की दुआ मांगे, आज बरकत की दुआ मांगे, आज बरकत की दुआ मांगे। ओह हालेलुया। खुदावंद हम जानते हैं कि आने वाले सालों में ऐ खुदावंद ये बच्चे तेरे जलाल के लिए, तेरी महिमा के लिए ऐ खुदावंद परवान चढ़े, और जो जो इन्होंने रोल अदा किया है अपने मुनज्जी खुदावंद को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए भी इस्तेमाल कर। आज वालिदैन के लिए और खुदावंद संडे स्कूल की सारी टीचर्स के लिए, बिलखुसूस खुदावंद हम सिस्टर वीडा के लिए, शैला के लिए और सब जितनी टीचर्स इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। पेरेंट्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए और इस प्यारी कलीसिया के लिए। खुदावंद इन महदूद वसाइल में तूने हमें बरकत दी, अब तू अपने लोगों को सलामती से रुखसत करता है। हमारा मददगार हो यीशु के पाक और चला के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको लेकिन आप मुझे माफ करें। अभी मैं बच्चों के लिए ऑफरिंग लेना चाहती हूँ, तो हम वो सॉन्ग गाएंगे, कम ऑन लेट अस अडोर हिम। आप बचाएंगे तो फॉर द संडे स्कूल ओनली, क्योंकि मुझे इन बच्चों को अप्रिशिएट करना होता है। और इससे पहले कि सिस्टर आगे जाएं, ये हमारी रुवायत नहीं रही कि हम हर दूसरी बार चंदा इकट्ठा करें। मैं कमेटी की तरफ से $300 इन बच्चों को देता हूँ। और उसके साथ 100 मेरी तरफ से एज अ पर्सनल अप्रिशिएशन टू दोज little ones. And those who want, wish to give them. और किसी का अगर इंडिविजुअली आपका दिल चाहता है, you can say that मुझे खुदा ने कहा कि I have to help them, और if you want to give individual gift आप दे सकते हैं। हाँ जी, इंडिविजुअली मैं फोर्स नहीं करती हूँ, वो भी मुझे इनके लिए गिफ्ट को लेकर देने पड़ेंगे, and I'll appreciate if you willingly want to give. Thank you. गीत आप अपना गाएं।
हाँ तो काम लेटर्स